வெல்கம் டு RGR அகாடமி யூடியூப் சேனல். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு என்ன வீடியோன்றதை பார்க்கலாமா? நீட் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்று நீங்களும் டாக்டராக வேண்டுமா? கவலையை விடுங்கள். சென்னை RGR அகாடமி பல்வேறு மாணவர்களின் டாக்டராகும் கனவை நிறைவேற்றி வருகிறது. நீங்களும் இன்றே RGR அகாடமி நடத்தும் நீட் ரிப்பீட்டர்ஸ் 2021 பேட்சில் இணைந்து உங்கள் கனவை நிறைவேற்றுங்கள். தொடர்புக்கு 8695186953. Good morning everyone. I am Pawan Kumar, Physics faculty from RGR Academy. I welcome you all to the RGR Academy's YouTube channel. So we are introducing a YouTube channel in Hindi. Means new channel is in Hindi, and previously also we are doing the videos for Tamil medium as well as English medium. Okay, so today I will take the class in combined Hindi English as well as English. So see this, first of all I want to explain you the basic method how to approach for the physics. So this will be helpful for you in NEET as well as for JEE exam. Okay, so if you see, first I will talk about the NEET exam. In NEET exam, they are actually asking 45 questions. How many questions they are asking? 45 questions. So in 45 questions में से अगर हम बात करें वेटेज की, तो क्लास 11th एज वेल और क्लास 12th दोनों का वी कैन कंसिडर अराउंड 50-50% वेटेज. ओके, वेटेज क्लास 11th का और क्लास 12th का वेटेज अराउंड 50-50% होता है. सो इन दिस if you consider, they are asking around 22 questions from class 11th, or we can consider 23 questions they are asking from class 12th, or it can be reversed also. Okay, one or two questions more or less from both the standards. Okay, 11th as well as 12th. So अगर हम जैसे कि देखा जाए 45 क्वेश्चंस में से अगर अपने को स्कोर करना है अराउंड 150 to 160 मार्क्स, सो आज हम बात करें कि उसके लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच हम फॉलो करें जिससे कि हम ये मार्क्स प्राप्त कर सकें इन एग्ज़ाम. ओके, सो क्लास 11th में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर. सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन. आप उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर और रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास, ये सारे चैप्टर्स बेस्ड हैं वेक्टर्स एंड न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर. सो अगर हमारे ये दो चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग हैं तो हम बाकी के मैकेनिक्स इजीली समझ सकते हैं. ठीक है, सो द मोस्ट वेटेज इज फॉर मैकेनिक्स सेक्शन इन बोथ जेई एज वेल एज नीट एग्जाम. ओके, मैकेनिक्स इट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 40% ऑफ द वेटेज ऑफ फिजिक्स पेपर. नीट एग्जाम और जेई एग्जाम दोनों में कह सकते हैं ऐसा. सो इन मैकेनिक्स सबसे पहला चैप्टर अगर बात करें वेक्टर्स, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट वन इज वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन. सो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से वो है रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास, वर्क एनर्जी पावर. इन नीट एग्जाम में अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस दे विल आस्क यू फ्रॉम रोटेशनल मोशन. सिमिलरली 1 or 2 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. And similarly, work energy power is also very important chapter because the concept of this work energy power also we are using in other chapters. Okay, in class 12 syllabus also we can use the concept of work energy power. So it is a basic chapter. So vector, Newton's laws of motion and work energy power, very important chapters for a preparation of physics. Okay, so generally what mistake students do, initially they are not focusing on these chapters. Okay, because this is the initial chapters. Generally they are not asking any questions from vectors. Means sometimes only they will ask you questions from the vectors, but it is very important because it has application in other chapters. So अगर हमारा वेक्टर चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो न्यूटन्स लॉस मीन्स पूरी मैकेनिक्स में ये यूज़ होगा वेक्टर्स चैप्टर. सो वेक्टर चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें बेसिक से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू अराउंड 40% ऑफ द वेटेज इज फॉर मैकेनिक्स. आफ्टर दैट अगर हम बात करें क्लास 12 सिलेबस की, क्लास 12 सिलेबस
फर्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें जो चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा चैप्टर्स इसमें एक और चैप्टर अगर हम बात करें तो कैपेसिटेंस, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जो लास्ट चैप्टर और या यूनिट बात करें वो है मैग्नेटिज्म, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ओके, इन मैग्नेटिज्म द नेक्स्ट चैप्टर इज लाइक EMI you can consider, and next one is AC. Means these are the three chapters in unit magnetism, EMI, AC. One more you can consider EM waves. So the next important section, if you see from the point of view of marks, is electromagnetism. So these are the chapters consisting of electromagnetism, and the weightage of this unit is also very high. So अगर हम मैकेनिक्स पर ध्यान दें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर ध्यान दें तो हाफ ऑफ द फिजिक्स विल बी कवर्ड बाय दीज टू सेक्शंस, मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि है मॉडर्न फिजिक्स, जो कि आसान भी है और वेरी शॉर्ट यूनिट, एंड इन दिस इजिली वी कैन स्कोर directly. formula based questions they will ask you in exam, so if you know the formulas and little bit calculations will be there, then easily you can score in modern physics. इसमें दो चैप्टर्स अगर हम देखें तो पहला एटॉमिक फिजिक्स और दूसरा है न्यूक्लियर फिजिक्स. इससे पहले अगर बात करें तो डुअल नेचर ऑल्सो वी कैन कंसिडर, एंड एक्स-रेज विल कम अंडर दिस. ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स. सो ये 3-4 चैप्टर वी कैन कंसिडर इन मॉडर्न फिजिक्स, एंड द वेटेज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज ऑल्सो हाई. मीन्स अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फ्रॉम द मॉडर्न फिजिक्स इन नीट एग्जाम. ओके, एंड द क्वेश्चंस विल बी फॉर्मूला बेस्ड एंड सिंपल, सो इजीली यू कैन स्कोर. इसके बाद अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बात करें, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मीन्स इसमें चैप्टर्स तो काफ़ी हैं, जैसे देखा जाए कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफ़र. जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वी कैन कंसिडर KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र. सो मीन्स दो क्वेश्चंस, अराउंड 2 क्वेश्चन दे आर ऑलवेज आस्किंग फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स इन नीट एग्जाम. ओके, एंड 1 क्वेश्चन इज श्योर फ्रॉम heat transfer. Sometimes they can ask you the questions from KTG, around 1 question, or sometimes they are not asking. They can ask you question from calorimetry. Okay, calorimetry. So ये कह सकते हैं हम कि उसके बाद जैसे थर्मोडायनेमिक्स देखा जाए तो अराउंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फ्रॉम दिस यूनिट ऑल्सो. आफ्टर दैट इफ यू कंसिडर वेरी important unit, that is semiconductor. Semiconductor भी काफ़ी important है. This last year in 2019 3 questions they have asked from semiconductors. Around 3 questions they are asking. So it is a single chapter. Okay, semiconductors and logic gate. So single chapter में से around 3 questions they are asking. So it means it is very important. Okay, and questions will be easy from the semiconductor. So semiconductor we can consider. After that the remaining chapter. Okay, so बचे हुए chapters like fluid mechanics we can consider, and properties of solids. This will include elasticity and this chapter. In fluid mechanics we can consider this pure fluid mechanics. After that surface tension and we can consider viscosity. Okay, so these are the units weightage wise. So सबसे पहले हम बात करें कि मतलब फिजिक्स को अप्रोच कैसे करना चाहिए, कैसे हम अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं. कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी. मीन्स
अगर हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी बात है कि हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं फिर हम 2 दिन का रेस्ट ले रहे हैं। सीधा ज़रूरी बात यह है कि अगर हम डेली भी पढ़ें, अगर 3 घंटे हम डेली दे रहे हैं तो वी हैव टू स्टडी on the daily basis continuous for around means 1 year, because 1 year or some students are preparing for 2 years or 1 year, so around 3 to 4 hours self study is important. Okay, it is not like that one day you will study for 8 to 10 hours, then you will take the rest for 2-3 days, you will not see the books also, so then your marks will not improve. Okay, so first important point है कंसिस्टेंसी, मीन्स किसी भी सब्जेक्ट के लिए। फिर स्पेसिफिकली हम फिजिक्स के बारे में कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जिससे कि हम फिजिक्स आसानी से समझ सकें और इजीली अपना स्कोर बढ़ा सकें। ठीक है, सो पहली बात हो गई कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बोथ आर इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ सी, अगर हम बात करें फिजिक्स की, सो कैसे हम अपने स्कोर को बढ़ाएं, और generally medical students find it tough also. Physics subject is tough, okay, because they are dealing with bio which is theoretical, and chemistry also, half of the part of chemistry is theoretical, but in physics it's purely numerical. But generally अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं फिजिक्स को, कि थ्योरी के ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं देते। थ्योरी, फिजिक्स में भी थ्योरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि बायो एंड केमिस्ट्री में। अगर हमारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज फ्रॉम द थ्योरेटिकल पॉइंट ओनली वी विल गेट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल एंड देन टू यूज द कॉन्सेप्ट इन द न्यूमेरिकल। ओके, सो डायरेक्टली विदाउट रीडिंग द थ्योरी प्रॉपरली वी कैन नॉट सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी शुड फोकस ऑन द थ्योरी, मीन्स थ्योरी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, देन ओनली वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल्स। ओके, सो इन फिजिक्स the first important point we should focus on theoretical part, like whole physics is based on physical quantities like velocity, speed, acceleration, these things we are discussing. So सबसे पहली बात है कि इसकी डेफिनेशंस एकदम क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशंस और जो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, लाइक जैसे हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो उसका सिंबल यूज़ करते हैं ओमेगा। सो जनरली कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे आर गेटिंग अफ्रेड ऑफ द सिंबल्स दैट वी आर यूजिंग इन फिजिक्स लाइक ओमेगा, अल्फा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ सिंबल्स, वी शुड नॉट हैव एनी फियर ऑफ द सिंबल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द फिजिकल क्वांटिटी लाइक एंगुलर वेलोसिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, सो वी शुड नो the definition of angular velocity and all the formulas related to angular velocity। सारी definitions और सारे formulas related to angular velocity हमें पता होने चाहिए। நீட் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்று நீங்களும் டாக்டராக வேண்டுமா? கவலையை விடுங்கள். சென்னை RGR அகாடமி பல்வேறு மாணவர்களின் டாக்டராகும் கனவை நிறைவேற்றி வருகிறது. நீங்களும் இன்றே RGR அகாடமி நடத்தும் நீட் ரிப்பீட்டர்ஸ் 2021 பேட்சில் இணைந்து உங்கள் கனவை நிறைவேற்றுங்கள். தொடர்புக்கு 8695186953. நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.